is. हाँ, आई थिंक उसके बाद वो आया भी था, किसी ने रिव्यू भी किया था इच यू कांट स्क्रैच को, जिसमें उसने वो फोटोज डाले थे। दीज पीपल, सुमित रे ने किया था, दीज पीपल डिजर्व टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू, दिस एंड हियर्स अ बुक अबाउट अ पर्सन हु हैज डन नथिंग एंड ही इज टेलिंग हिज लाइफ स्टोरी। देखो आजकल के टाइम में तो मोस्ट बुक्स आर अबाउट पीपल हु हैव डन नथिंग, सो आई मीन कंसिडरिंग दैट एवरीवन लव्स mediocrity in India, तो मतलब that is a perfect book. Everything is very normal, there's nothing exceptional in it, but it was fun to read. Okay, so today we are going to talk to Jatin Verma, the founder of Comic Con India. Way early, he was my boss and publisher of my first graphic novel, The Itch You Can't Scratch. And basically, Itch You Can't Scratch is an autobiography of a nobody. कि बेसिकली इसको मैंने तब लिखा था जब मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया था और मैंने सोचा मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा अपनी। तो वो है एक बेकार अजीब सी कार्टून बुक है। मतलब लोग ऐसा जब बूढ़े हो जाते हैं तब सोचते हैं कि चलो मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया है, ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ। कुमार साहब ने 23 साल की उम्र में कुछ ना करके लिखते हैं, चलो क्या होगा। तो हाँ, so he was my publisher, and in this episode we're going to talk about The Itch. We're going to talk about Comic Con India. Comic Con India शुरू कैसे हुआ, उस Comic Con India से पहले जतिन ने क्या क्या एफर्ट्स किए, एंड मेरी इन्वॉल्वमेंट उनमें, एंड जनरली अबाउट कॉमिक्स एंड एनिमेशन, अबाउट ग्राफिक नॉवेल्स, जो मैं 24 घंटे बकवास करता ही रहता हूँ ये पीछे हाँ, एंड अ लॉट मोर। तो शुरू करते हैं। इच यू कांट स्क्रैच, which you published, I wrote and drew. तो and which came out in 2011 at the first Comic Con. मेरे लिए मेरा पूरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, मेरा पहला ग्राफिक नॉवल। बट माय क्वेश्चन हैज ऑलवेज बीन, व्हाई डिड यू इवन कमीशन इट? मतलब आई हैड नॉट रिटन एंड ड्रॉन एनीथिंग बिफोर, कुछ बेसिस नहीं था। I mean, you've not written and drawn something long format, but you've done those comics for एक वो traffic के लिए, and then for random, which were these magazines. So you had मतलब you weren't a published some मतलब you weren't a graphic novelist, a comic book published comic book person, but तूने you had done it for our magazines, ना? हाँ, but still, like, wasn't it it was still in terms of money at that time, because मेरे को उस टाइम पे कभी भी कंपनी के फाइनेंसेस ऑब्वियसली नहीं पता थे, तो बट वर यू गुड विद स्पेंडिंग दैट मनी? was there There a was larger not. plan, या was that an instinct? I don't. There was no larger plan to it. I mean, ऐसी चीज के लिए how can you have a larger plan? What larger plan can you have? But it was not really some extra kharcha, in the sense everyone was working on payroll. So I mean, you had a job, and this was one of the projects you were doing. It just so happened that that was your own graphic novel that we were going to publish. But I mean, I think it was the idea of. I mean, I don't remember if there was any one particular moment where, oh, this is, we should do it or whatever. It's just that I think it was a series of conversations, jokes about stuff you said you did when you were in college, and जो तू अपने ऊपर मजाक उड़ाते रहता था, and बाकी लोग तेरा मजाक उड़ाते थे, most more importantly. And then I think you had उस वक्त you had वो तुझे, you know, a lot of people around you also taught you कि कैसे better करना है अपना sketching style and everything. So I think from there only it took off. I mean, there was no larger plan. हाँ, ये था कि it would be nice to publish a book, and from what I understood उस वक्त anyone in any case who published a comic book ever, तो ऐसा तो था नहीं, they came from some experience. So everyone always did it because they could do it. So yeah. आई डोंट नो, अगर आपको याद है तो वो उस टाइम पे मैंने ना अपने ब्लॉग पे आई हैड पब्लिश दैट
3 पेज की एक कॉमिक बनाई थी. तो आई कॉल्ड इट दिमाग एक खाज एंड आई पब्लिश्ड इट. और वो देखकर ऑल्सो यू रोट, उस टाइम पे यू रोट के इफ यू वांट टू टर्न दिस इनटू अ कॉमिक बुक. और उस टाइम पे एक्चुअली मैं काफी बहुत ही डाउनर टाइम पे था. आई वाज कंसिडरिंग इवन मे बी डूइंग समथिंग एक्सट्रीम, लाइक आई हैड नथिंग इन लाइफ. मैं थक चुका था उस टाइम पे. एंड दैट वन ईमेल सॉर्ट ऑफ क्या हुआ कि जब वो बुक चालू हुई ना, it took away all my energies. So the issue was that I had a lot of energy and excessive energy which was not going anywhere. And So that basically, book, I saved your life. It's यही बात है. ये है. हाँ, पर मैं कहना नहीं चाहता सीधा. I don't want to. मैंने कह दिया. मैंने कह दिया. अच्छी बात है. You could put your mind to it. I mean, I didn't know that you were mentally facing all of that. Even though I think उस time पे everyone who used to work was pretty enthused about. It was more personal than, I mean, I don't keep it that personal anymore, but it was more personal at that point in time. Everyone was friends with each other. They used to hang out a lot more. We seemed to know a lot more about each other's lives as well. So I'm surprised, but it's good if that made you focus on something. या मतलब हाँ, वो और वही था कि बट एक और चीज उसमें हुई थी कि आई थिंक यू गेव मी फर्स्ट टाइम यू गिव मी अ टाइमलाइन ऑफ. और अब उसको 10 साल हो गए. एंड दिस ईयर कॉमिक कॉन इंडिया आल्सो इन फेब वाज 10 years एंड द बुक इज कपल्ड विद इट. तो आपने मुझे ओरिजिनली आई थिंक 9 महीने का टाइमलाइन, 9 महीने या 6 महीने का टाइमलाइन दिया था. रिडिकुलस टाइमलाइन था वो, फॉर अ फुल बुक. मतलब वी डिडंट नो पेज भी कितने 6 होंगे. months. I mean, 6 months is not ridiculous, but ये था कि because there was no, I mean, ऐसा नहीं था ना कि कोई स्टोरी लिखी हुई थी जिसको आप इलस्ट्रेट कर रहे हो. हाँ, आप साथ साथ में स्टोरी लिख रहे थे, आप अपने एक्सपीरियंसेस बना रहे थे. एंड हाँ, if someone reads the book, it's basically, it starts off with a narrative, ठीक है, about a confused young person, but then it also goes into your family life, your uncle. So and that was a lot of filler material that we had to put in because we weren't, no one was sure ke acha how do you end it, because aisa to hai nahi ke you've done something where you have kind of figured out, okay, this is where I'm headed. But that's okay. That's how most such biographical stuff. डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ ना थोड़ा. आपने, मुझे ये याद है जितना डिस्ट्रीब्यूशन का तब तक आपका एक्सपीरियंस रहा था वो था मैगजीन्स का, जिसमें यू हैड स्टोरीज लाइक के वो कुछ तो कवर काट के कोरियर कर देता था कोई, के बुक्स नहीं बिकी. वुड यू जस्ट वांट टू सम इट अप के बस हॉरिबल था और खत्म करना है, या कुछ मतलब बिकॉज देयर सो मेनी पीपल जो ना बार बार आके अभी भी पूछते हैं, उनको अभी तक इन दिस टाइम एंड डेट पीपल आल्सो वांट टू यू नो they think publishing graphic novels is going to make them money. It is not going to make you money if you just think you're going to sell books. It could make you money if you have larger ideas with it, but उसमें भी time लगता है. And India जैसी जगह में it takes a long time because we don't really, it's very difficult to do unique things here. So after a while everyone wants to do the easy thing to, which is वो, I mean, I hate this word, वो lowest common denominator को idiot proof करके वो कर लो. बिकॉज क्यों एफर्ट मारना जब ऑडियंस ही नहीं एफर्ट मारने वाली, तो आपको क्या जरूरत है स्पेशली कुछ करने की एक्स्ट्रा. बट देन या सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पिछले 10 years में बहुत कोशिश की थी टू सेल बुक्स, एंड you can sell them, but I mean that cannot be your bread and butter. I mean, makes no sense. मतलब unless you're a publisher which is doing, मतलब आपने पैसे लगाए ना, आप hundreds of books पे जा रहे हो, over a period of many years maybe it'll turn okay, but even then it's a very hard वो, Sell. yeah, it's a hard sell. इन ये जब हमने इट यू कांट स्क्रैच निकाली तो उस टाइम पे आई थिंक एक्सीडेंटली हुआ था वो, वेयर वी रोट किताब के पीछे आफ्टर राइटिंग फॉर सविता भाभी, which sort of became अपने एरा का गैस लाइटिंग, क्योंकि आई थिंक वी गॉट just random coverage just because of that one line, क्योंकि जनता को Yeah, but we had to, na? Even though I think you were rejected by them, right? what Yeah, they took an idea but they didn't use your story. no, they used 3 stories. They asked me to write first story जो मैंने लिखी थी. They rejected all the porn parts I wrote.
So they said you don't know हाँ, how sex is done basically. तो उन्होंने हाँ बोला यार, sex is not ooh and ah in alternate panels. There's more to it. तो उन्होंने मेरा पूरा sex वाला part reject कर दिया था, सिर्फ stories रख ली थी, plot lines. that's really sad यार, ऐसे insult, मतलब तूने इतना porn नहीं देखा था लाइफ में कि especially story वाला porn where you could write it like that. No, वही ना story part I was writing. तो मैंने सिर्फ porn देखा था, मैंने reality में इतना experience नहीं था मेरे पास, तो मैं काफी porn वाले मैं नहीं पूरा वो but वो तो टेम्पलेटाइज्ड आई थिंक पॉर्न सेक्स लिख रहा था व्हिच इज इन दिस 5 स्टेप प्रोग्राम ना, तो हाँ. but you know you could use that leverage to now get writing के थोड़े से chances on some of the OTT platforms. There's so much bad sex on them. हाँ, वो जो पूरा वो सॉफ्ट कोर वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है. Yeah, like there are these shows. One thing is called Triple X actually. Then I know someone Gandhi Baat, and that's on Alt Balaji. So yeah, आई थिंक ये अच्छा लेवरेज है, ये एक्सप्लोर करता हूँ मैं. मतलब वो सविता भाभी वाला एंगल हमेशा कामयाब रहता है. वो 24 वो एवरग्रीन वो वहां गोल्ड से है. शुरू हुआ था, अब OTT पे पहुंच गया, लाइव एक्शन हो गया, तो you हाँ, could write for it. आई थिंक हाँ, करता हूँ ट्राई. नहीं but वो तो यूज करना बनता था ना, because at that point in time it had some PR value, something which could get someone talking. और वो तो yeah. लिखने की वजह से क्या हुआ था, ये जो जो उसका एक्चुअल क्रिएटर है ना, उसने मुझे फिर ईमेल करके लिटरली गाली दी थी कि मतलब बिकॉज एक इंडिया टुडे वाली जर्नलिस्ट ने लिख दिया था कि मैं ही क्रिएटर हूँ सविता भाभी का. तो उसने उसको खुंदक आ गई, उसने मुझे मेल पे पूरी गालियां भर के लिखी. और एज यूजुअल मुझे दिन में एक बार अपोलोजाइज तो करना ही होता है, फिर मैंने उस दिन उसको अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला. but बकवास वो था तो वो. तेरी गलती थोड़ी है if someone miswrote it. उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको लग रहा है, उसको नहीं पता ना एक्चुअल स्टोरी. उसने मुझे गालियां लिख के भेजी और बाद में हमने बुक को प्रमोट करने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी. तो उसमें फिर उसने लिखा था गिविंग वर्कशॉप्स नाउ, ऐसे करके उसने कुछ सरकास्टिक सा ईमेल भेजा था. तो हाँ, मतलब वो काफी उस एक हफ्ते के लिए सड़ गया था वो बंदा. बेचारा, हाँ. उसकी stole his limelight. बट हाँ, तो उस वजह से काफी अपनी बुक बिकी एंड इट गॉट लाइक द परफेक्ट लॉन्च कॉमिक कॉन पे, बिकॉज like even with I think Comic Con India tak generally I think like for 20 onwards media and usse pehle I tried doing something a little venture kind of a thing with my friends, and then you told me to come and work at 20 onwards media full time because I was anyways मैं वहीं पढ़ा रहता था किसी ना किसी रीजन से. तो यू सेड कि अब काम ही कर ले, अब आ ही जाता है रोज. तो तो वहां पे तू कोई हिट 95 के लिए तू इंटर्न था ना? नहीं, हिट 95 के लिए इंटर्न था. तो वहां मैंने और वो हाँ, you had something called backbenchers or something, I remember. हाँ, That was सो you? आई बेसिकली सॉ वहाँ ट्रैफिक लाइव, द फर्स्ट मैगजीन 20 onwards मीडिया का, दैट केम देयर एज अ ब्रीफ, द वन दैट हैड विनय पाठक ऑन इट्स कवर. एंड आई Yeah. सॉ दैट, और मेरे को उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही थी एंड आई बीन थ्रोन आउट ऑफ कॉलेज. तो आई वाज गोइंग बैक टू कॉलेज टू रिपीट द ईयर विद माय जूनियर्स. तो मेरे को उस Okay. टाइम पे था कि मुझे कुछ काम मिल जाए, तो आई रीच्ड आउट टू यू वो देख के कि मेरे को बेसिकली फ्रीलांस में अगर कॉमिक्स या कुछ बनाने का काम मिलेगा. एंड उसके बाद व्हेन आई केम बैक देन आई वाज रनिंग दिस डिजाइन स्टूडियो विद अ फ्रेंड, रियली स्मॉल, इट वाज कॉल्ड यू ऑनलाइन. एंड उसके साथ मतलब बेसिकली आई डिडंट कम अप विद वन आइडिया, आई केम अप विद अ ग्रुप ऑफ कंपनीज का आइडिया. Wow. 4-5 चीजें, और इनमें से कुछ भी ढंग से नहीं किया, बट वो जमाना अलग था सुमित. but what I wanted to say is कि I think for 20 onwards media, like वो हमेशा से वैसा था कि हम सब मिलके कर रहे थे. And we would try all these things, and whenever they wouldn't work, it would pinch. And मतलब to you सबसे ज्यादा maybe, but like generally भी effort लगाने के बाद it would pinch because we were putting in all this effort, and Comic Con India became such a huge thing. I think film production तब तक अच्छे से चालू हो गया था. टीवी शोज हम फिल्म बना नहीं, रहे थे. टीवी टीवी हम तब तक कर रहे थे अच्छे से. फिल्म प्रोडक्शन के लिए एक मीटिंग जरूर की थी जिसमें आई थिंक तू भी था, राइट? वो अनुराग कश्यप के ऑफिस में. अनुराग कश्यप के ऑफिस में, जिसमें वो मतलब टोन पे रख के सुपारी खा रहा था.
मतलब जिसके if anyone had any indie feelings for Anurag Kashyap, that were gone by then. वो आया, वो बस हाथ मिला के चला गया था, और मेरे को फ्रैक्चर हो रखा था, तो मेरे पास हाथ आया, मैंने बस ऐसे ऐसे किया, उसने नमस्ते किया, फिर वो चला गया। और फिर वो कौन बंदा था जो सुपारी खा रहा था और जो बोल रहा था मेरे नाम वो के बाद ग्रेट लगता है? नहीं, it was this gentleman called the Sunil Bohra. He's in fact he's a big time. He was manager or distributor for him, and उनकी कोई movie थी Girl in Yellow Boots. हाँ हाँ, And they thought कि we would be interested in buying or paying them to just be put your to logo have a there. game part, yeah, something like that. आई थिंक ही वाज वो प्रीटी तो क्लियर, obviously, इतने पैसे दो और लोगो बनवा के भेज देना MP4 या कोई फॉर्मेट, और फिर हम उसको डाल देंगे, ऐसा कुछ था उसका सीधा। yeah, and then प्रॉब्लम ये थी ना कि वो उस मूवी के लिए तो लाइफ में कभी पैसे देने का मन नहीं था, बिकॉज दैट मूवी वाजंट दैट ग्रेट, और वो हम्म। फ्लॉप हो गई थी आई थिंक। बट या उसमें हाँ, सो टीवी प्रोडक्शन करते थे। उसका उसका पर सबसे क्लासिक चीज जो उसने बोली थी, जो मुझे आज भी याद है, वो था कि दुनिया में दो ही लोगों के नाम के बाद द ग्रेट लगता है, अशोका द ग्रेट और बोहरा द ग्रेट। नहीं, एक चीज थी, आई वेरीफाइड ही, बिकॉज ही वाज, आई डोंट नो व्हाट क्या था, बट ही वाज ऑलवेज थैंक्ड इन अ सलमान खान फिल्म, अच्छा। एंड ही वाज कॉल्ड सुनील द बोरा। नहीं, और मुझे लगता है उसकी फिल्मों के बाद में मैंने लोगो ऑब्जर्व करने शुरू किए, उसका एक लोगो है जिसमें पता नहीं एक बंदा ऐसे टोपी या कुछ कर रहा है और दो बने हैं बंदे, और बोहरा ब्रोस करके आता है, आई थिंक बहुत सारी अनुराग। वो हाँ, वो तो दैट वाज हिज कंपनी, बट हाँ, ही वाज थैंक्ड इन ऑल आई सलमान रिमेम्बर खान फिल्म। Yeah, I remember basically I think he only told us कि मेरा नाम जब आता है फिल्म में, so it says सुनील द बोरा। हम्म। Yeah, I think obviously अभी भी होगा तो। और हम लोग हम लोग बना रहे थे डियर टू डेट, जिसमें आपने नहीं मेरी नेशनल ब्रॉडकास्ट किया था मेरा। नहीं, but वो Dare to Date, so for people who don't know, Dare to Date is like a copy of एक show आता था US में, Real Date, and I हम्म। had DVDs of it, so we just saw how the format was, and then उसका एक पायलट बनाया था जिसमें एक नकली क्या ऑलमोस्ट रियल डेट पे सुमित गया था in my car, and we shot it, and it was actually fun because you were being yourself and the girl was just weirded out and and you were trying to tell her about Osamu Tezuka, and वो तेरी शक्ल देख रही है कि पागल आदमी है। मुझे उसमें ये याद And है, उसमें वो कुछ तो बोल रही थी अबाउट पॉलिटिक्स, और उसने कुछ कुछ बोला कि मुझे ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, और मैं बोला वो गवर्नमेंट नहीं होता, वो गवर्नेंस होता है, और उसका उसने सिर पकड़ लिया था उस पे, आई थिंक बाय दैट पॉइंट। yeah, and then we edited it to make you look even worse, and then we sent it to Channel V, and उन्होंने कहा हाँ ये बनता है, and then they came up with the name Dare to Date, हम्म। so they paid us to make the show. But उसमें उसके second season में जाके when we ran out of unique people, then we again cast you, and then you went on an actual date on that episode. वो जो बकवास है ना, वो मेरी जिंदगी का ऐसा जहर है ना, जो किसी गोरे पॉलिटिशियन के लिए होगा ना कि उसने कू क्लक्स क्लैन के साथ हाथ मिलाया हुआ है और उसकी फोटो है, वो मेरे लिए वो बन चुका है लाइफ में आज, पता है। मैंने वो अगर अगर चैनल भी अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आई डोंट नो, तो नहीं यार, और वो शो हाँ। चल रहा होता तो मे भी होता। अब वो खत्म है। स्टार्टिंग में हाँ, आई एग्री कि सम पीपल सॉ यू एंड दे रिकॉग्नाइज्ड यू, और एटलीस्ट यू सेड किसी ने मुझे पहचाना था, बट मुक्का मारा था बंदे ने मुझे, मुक्का रोड पे। किसने? तो मैं, जो हमारा ऑफिस था वहां से मैं बाहर निकला था जब वो आ चुका था, तो उस टाइम पे हम लोग जाके कैंपस ब्लॉग्स वगैरह शूट करते थे, तो मैं बाहर निकला था और मैं जा रहा था कहीं से, और वहां से एक आदमी निकला कुछ खाते हुए, टूथपिक से दांत साफ करते हुए, और मुझे देखा, ए स्पेकी, ए स्पेकी, और मैं पीछे मुड़ा, ओ तो वही है ना जो आया था, इधर आ, इधर आ। मुझे बुलाया, तो ना आया था, चश्मा उतारियो, चश्मा उतारियो। मैं नहीं उतार रहा, उतार, में नहीं उतार रहा, और उसने फिर रख के मुझे मारा था। क्यों? क्योंकि मैं टीवी पे उसने देखा ना, मैं कार्टून कैरेक्टर हूं ना, मैं उसके लिए ला करूंगा ना मैं उसके लिए। Was this in नारायणा विहार? हाँ। अब फिर तो नारायणा में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, नारायणा विहार के लिए आप कुछ मत बोलो, दैट्स द प्लेस वेयर कार्टूनिस्ट प्राण आल्सो लिव्स, जिनको जूस उससे देखते हुए अनंत स्पॉट करता था। मैं करता था हर रोज, वो वहां पे रहते थे, जूस पी रहे होते थे बाहर। और सेम मुंह बना के जो उनका उसमें है। नहीं, वो अनंत बकवास कर रहा था, बट पहले आई सॉ हिम कपल ऑफ टाइम्स, एंड मैंने कहा यार ये शक्ल बड़ी पहचानी हुई है,
हाँ मुझे ध्यान नहीं था वो वहीं रहते थे, फिर बाद में पता चला ही lives right there only, and then I think we went to meet him उनके स्टूडियो में. but anyhow, so again, so day to date हो रहा था, and I guess we were better off. I think far better off with finances than we were way before. Yeah, obviously we were making money. That thing was not a magazine, so हाँ. So then we did Comic Con, and I think वहाँ Comic Con भी extremely मतलब फट गया, एंड बुक को भी अच्छा रिएक्शन मिला, एंड विच मेरे लिए आई थिंक द ओनली अचीवमेंट वाज कि वो छप गई थी. so yeah, book उस वक्त चली थी. हाँ. चली in the sense के yeah, I mean it was one of the few new things for people to buy at that Comic Con, because mostly the other stuff was stuff that I mean you might be aware of के अमर चित्र का था or something, वो और level 10 था नया, and एक दो और people, which was too experimental for people, but this was like easy to pick up and do it. So in the book, didn't you find it weird कि वो the choice of using Hindi in Devanagari script with English, जो usually ढाबों के बाहर नोटिस लगे होते हैं लड़का चाहिए उस टाइप में होता है वो, how like didn't you it mentally challenge your वो के क्यों like इसको फॉर्मेट में करना है, कुछ कुछ वो नहीं था लिटरेचर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. As long as you the whole idea was people should get the joke or get the gist of it. मतलब I don't remember thinking so much about it. ओके. आई लाइक कैसे इस पूरे में मैं अपनी खुद की डीप डाइव करने लाइक मैंने आई डिडंट थिंक सो मच अबाउट इट. बुक में डिड यू स्पेंड मनी, डिड यू वरी अबाउट द डीलेस? नहीं, मैंने पेरोल पे थे, सैलरी देंगे. डीलेस में यही था कि आई थिंक यू हिट अ वॉल बिकॉज तुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो खत्म कैसे करनी है किताब. हाँ. So then Anand and Adiraj had to help you. The name had to be thought of. The cover idea. क्या कहते हैं? And then I think if I'm correct, तेरी किताब मतलब end late हुई थी खत्म, but it was still better off than Oud Bilao Manus. So I think that वो happened, तो that was finished on the day, I think. yeah, वो तो लाल हो गई थी बेचारी छप के. आई थिंक मेरी So बुक वो छपी इसलिए थी क्योंकि मुझे वो सीजर आ गया था, उसके बाद हाथ टूट गया था ये वाला, तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था. और yeah, and then अमिताभ तुझे मार देता. आई थिंक ही वाज काफी अग्रेशन में आ गया था वो तेरे से, थक गया था तेरे से काम करते हुए, डील करते हुए. बट आई रिमेम्बर तेरी किताब तो खत्म हो गई थी एंड उस पे फाइट हो रही थी कोल्ड लैमिनेशन की, तो वो करवानी पड़ी थी बिकॉज उस पे जो उसका डिजाइन था उसमें इट हैड टू हैव अ लिटिल लाइक उसकी फील बेटर होती है, एंड बेसिकली वी टच योर क्रॉच एरिया एंड इट वाज रेज्ड. एंड वहां वहां आई वाज लाइक, जो व्हिच आई स्टिल अप्रिशिएट इज के लाइक यू स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी कि वो आने के बाद you sent it back again to get it वो embossed, and which I personally जब मैं अभी खुद से अपनी छोटी मोटी छापता हूँ तो I am always at this वो कि वो एक्स्ट्रा खर्चा does it deserve it, does it not deserve it? जब इतना टाइम लगा के पैसे लगा के कर दिया, तो अब वो लास्ट के 7 रुपए या 3 रुपए whatever that पर कवर कॉस्ट के चक्कर में क्या पड़ोगे. तो I mean I think it was Amitabh का suggestion. Basically I mean obviously cold and glossy lamination का होता है, but वो matte finish देने के चक्कर में and उसमें हल्का सा वो raised so that your crotch area is all raised. I mean also we were trying to sell it at a premium ना, मतलब premium in the sense कि मतलब like मतलब 50 रुपए की किताब नहीं है वो. So also it had the ability of because to be fair India में half the people are pseudo fluff, where something which honestly has no depth to it, but if you just package it in a manner, you can just say yes, I delved deep into my troubled childhood where my parents told me कि मुझे तो abortion करने वाले थे, मैं तो मर सकता था. फिर मैं वहां से पहुंचा पंजाब, वहां पे मैंने लिख दिया राज की जगह खालसा, और मुझे किसी ने बताया नहीं था कि उसका मतलब क्या होता है. तो stuff like that. तो क्या कहते हैं, so I mean if you wanted to sell it as something which is slightly, I mean not to मतलब you have to kind of pretend कि it was more deeper than what you were actually even aiming for. So
So the book has to, I mean, to be fair, agar if you buy a book, you want it to be nicely packaged, and that's what sells now. मतलब no one's going to stand and read the entire book. असली में तो कैसा कवर है, लुक एंड फील कैसी है, फर्क पड़ता है. मतलब वर्सेस के उसमें अगर एक्चुअली माल है तो हाँ, दैट इज अ एडेड, वर्सेस के जिसमें सिर्फ पैकेजिंग है एंड देयर इज नथिंग इनसाइड. यार वो सब्जेक्टिव है ना, इन द सेंस के ठीक है, यू फ्लिप थ्रू इट, यू सी द जिस्ट ऑफ इट, इट लुक्स फनी इनफ, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, but it's not like you're just paying $20 or $50 for it. So you just need it to look and feel like it's valued, कुछ effort डाला गया है. But and then obviously उसके बाद तो अब किसी को पसंद आए, किसी को तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत लोगों को तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ नहीं आता ना पसंद आता है, तो अब they would not probably like it. But अभी भी ना मतलब when I see there are a lot of graphic designers, right, and lot of designers who want to do a graphic novel for the sake of it, like it's a resume thing, या समझ रहे हो, like it's a thing which, and they don't get hold of the whole idea ना कि यार एक स्टोरी होनी चाहिए उसमें कुछ. ये तो अंदर का तुम्हारा क्रिएटर जाके खुंदक खा रहा है ना कि मैं यहाँ बैठ के चक्की पीस के यहाँ पहुंचा हूँ और तू अपने रेज्यूमे के चक्कर में, because you can design it, but yeah, that's true, a lot of people do it where it looks really great and the artwork looks nice, but the book is, the story is, there's nothing there. That's So, a lot of books, मतलब not just India में, मतलब बाहर भी. So like you know me, I don't read, I pick up all types of books, तो उसमें बहुत सारे, उसमें से 50% तो मिस होता है. how do you do, what do you do with the misses? उसके साथ क्या करते हो जो बकवास निकलती हैं? कुछ एक स्पेशल वो है उसके लिए, अलमारी वलमारी, या टेबल को लेवल करने के लिए उसके नीचे लगाते हो? नहीं, मैंने I think about 3-4 years back I did a charity sale where जो किताबें मुझे, I was willing to, I organized my books and उसमें से I took out about 200-300 books जो मुझे चाहिए नहीं है. So I told people you can come and pick it up, pay me 1,500, you can take any 5 books and that money goes to some charity. So almost सारी निकल गई थी, but I realized उसमें मेरी, मतलब बहुत सारे लोग, कुछ ऐसी किताबें थी जो कोई नहीं उठाना चाहता था. अब मैंने लास्ट ईयर अपनी सारी कलेक्शन को रीऑर्डर किया था बेसिस माय मूड, नॉट बेसिस एनी, मतलब डीसी को एक साइड, मार्वल एक साइड, बट मोस्टली आई डिड इट बेसिस माय मूड. सो देयर इज अ शेल्फ व्हिच इज जस्ट के ये किताबें जो मुझे बार बार पढ़ने का मन करता है, ये है जो डिप्रेशन वाली होती है, ये है जो इंडी वाली एक साथ हैं, जिसमें मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड इट वेयर इफ यू आस्क मी कि इसकी किताबें कहाँ हैं, आई नो एग्जैक्टली वो कहाँ है एंड आई डोंट हैव टू हंट फॉर इट. मैंने अभी आई थिंक अभी बीच में ना, अभी जब बकर मैक्स को हमने इनकॉर्पोरेट किया उससे पहले 2-3 साल निकले थे जो मतलब हैवी भुखमरी के साल थे. मतलब उस टाइम पे ये हाल था कि मैं while working in comics, while making massive amount of comics, so I was making one comic every week. With that output, even I was not able to afford to buy a graphic novel क्योंकि जनरली महंगी होती है, 700-800 के ऊपर थी. तो अभी जब रिसेंटली थोड़ा ये हुआ कि अब वो कंपनी बन गई है, मुझे फिक्स सैलरी मिलती है, तो मैं खरीद पा रहा हूँ और मैं काफी खरीद रहा था टू द पॉइंट कि आई थिंक जो लास्ट दिल्ली कॉमिक कॉन हुआ था उसपे बस वी वर लाइक 1 month अवे फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग. एंड मैंने क्या किया था, मैंने जो गल्ला कमाया था उसमें से मैंने पैसे निकाले एंड आई थिंक बिटवीन 3 कॉमिक कॉन्स मैंने 50,000 खर्च कर दिए ऑन ग्राफिक नॉवेल्स. ठीक है. और उसके बाद जब वो पता चला, जो मेरे साथ कंपनी सेटअप कर रहा था रेजी, उसने मेरी सैलरी से 10 महीने तक 5,000 पर मंथ काटे. जब तक वो पूरे नहीं हुए. बट एक चीज मैंने नोटिस करनी शुरू की नाउ दैट आई एम मेकिंग वेब कॉमिक्स, कि मैंने बैठ के पूरा रॉबर्ट क्रम्ब फोन पे पढ़ा, फोन पे स्क्रीन पे डिजिटली, और मैंने फिर पूरा कलेक्शन खरीदा. और मैंने जब फोन पे पढ़ा, आई वॉज नोटिसिंग सम नुएंसेस वगैरह विच अपीयर्ड मोर इन माई वर्क वर्सेस व्हेन आई रीड इट इन पेपर. So because I'm making so many web comics, I'm not able to borrow when I read it on paper.
I am able to only borrow when I read it on screen. बहुत ही एक अजीब सा था कुछ, I don't know हो कैसे. सकता है. हाँ, anyhow, so हाँ, coming back to the main track कि हाँ वो perfect launch भी था, and I think उसके बाद you again इसमें भी लगा यही response होगा. I don't remember हाँ हुआ होगा, but वो कॉमिक कॉन खत्म हुआ था डे वन, एंड यू टुक मी टू योर हाउस, क्योंकि हमें वहां से होते हुए दिल्ली हाट जाना था, आई थिंक डे 2 के बाद. हाँ हाँ हाँ. जहाँ आई थिंक यू गेव मी चाय एंड नमकीन विद वो अंकल वाली चम्मच जो ऐसे लेके हाथ में डाल के फिर खानी होती. हाँ, वो तूने मुझे 3 साल तक बताया था कि तूने वैसे खाया था मेरे घर हाँ, पे. वो किसी वही बस मेरे लिए एक्साइटिंग है वो. तो हाँ. उस टाइम पे आई थिंक आई वाज गिविंग सम बकवास, कुछ और बोले जा रहा था, व्हिच यू टोल्ड मी देन कि at that age to have published a full book was a big deal, which I think might be something that went to my head, because I बस that only went to your head. lot of things might have gone, but I think that might have started it, because I think फिर उसके बाद हमारी लड़ाई भी हुई थी, but and which went on, and but after everything happened, you were nice enough to give me rights back to which you can't scratch, and Yeah, I was never good. I never made any money on it. तो मेरे को क्या फर्क पड़ता, मैं क्या करता उस किताब का. हाँ, एंड मतलब बट वही था कि मतलब इट वाज स्टिल a really good thing, and I now have all the original artwork, and you know, as a creator वो एक बहुत बड़ी चीज है कि to have that in your hand. And even Adhiraj now, I think he has rights to Bilav Manus, which is, I think, a great solid thing for him, which I am pushing him to do something with it, जो वो Yeah, नहीं. I know he does ना. हर रोज ट्विटर पे he likes about 15-20,000 different tweets. That's the reason why I keep unfollowing him बीच बीच में. पर अब वो बकर मैक्स में शेयर होल्डर है और टेक्निकली मेरा बॉस भी है, तो फिर मुझे फिर फॉलो करना पड़ता है रेगुलरली. हाँ, तो Udbila Manas is more experimental. I mean, I don't know उसके साथ क्या किया जा सकता है. मैं उससे बात कर रहा हूँ, पुशिंग हिम. आई थिंक बकर मैक्स पे एक तो कोई कॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे कुछ, बट होना तो चाहिए, क्योंकि अब हमारी बट उसका उसका बाय द वे उसमें वेरी क्लियरली जो उसकी कॉमिक जो पब्लिश हुई थी उसका हाँ राइट है टू पब्लिश इट अगेन. ही कैन डू हाँ व्हाटएवर विद Udbila Manas एंड आई हाँ. आल्सो हैव राइट्स टू द रैप सॉन्ग. तो अगर शांति. उसने कभी कुछ सही किया तो फिर मैं उस पे पैसे कमाऊंगा. आई एम श्योर यार उसका वो बादशाह रीमिक्स हो आई जाएगा थिंक सबको सुनना चाहिए यूट्यूब खोल के उद बिना मानुस रैप सॉन्ग. चलो नहीं विद यार एनिमेशन. उससे क्या. विद एनिमेशन. विद एनिमेशन, यस, ग्रेट एनिमेशन. अमेजिंग एनिमेशन थी वो. एक्चुअली उससे ना एक और चीज जो मुझे पूछनी थी वो ये था कि इतनी अजीब अजीब चीजें उस टाइम पे हम कर रहे थे, राइट, कि किराए का शो, द randomly fancy dress party you did where everybody came कुछ कुछ बन के, प्रीतिका That was सरदार बन the के आई best. थी. हाँ. That was the best party ever. I mean वो मैं इतनी अच्छी थी कि कैमरा नहीं चल पाया था. And till this day I have not met anyone जो उस पे आया था जिसको मजे नहीं आए थे उस पे. वो सही अभी भी में सोचते हैं मतलब मेरा वो it है could कि not be आई recreated. डोंट नो गोल क्या मोटिवेशन था उसका, बिकॉज इट वाज नॉट एनीथिंग दैट वाज फॉर पब्लिक कंजम्पशन. इट वाज अ पर्सनल पार्टी, Yeah तो फैंसी घर पे ड्रेस पार्टी. पार्टी. हाँ, बट आई Cosplay आई party. I'm sorry कॉस्प्ले cosplay. पार्टी, और मैं Before अमर cosplay. अकबर एंथनी का का प्राण प्राण बन था के आया था. वो हाँ, सोने के बिस्किट. सोने के, और मैंने लिटरली एक क्रेट लिया था, मैंने पार्ले जी को गोल्डन पेंट करके उसमें रखा था, अपने बाप का सफेद सफारी सूट लेके उसे गंदा किया था वो Yeah पहन के, yeah. और मैं डीटीसी बस में आया था. तो मैं जिसमें एक पूरी डीटीसी बस में बैठा था क्रेट लेके, जिसमें सोने के बिस्किट है और लोग मुझे देख रहे थे. उस बट दिन मुझे माय याद है. क्वेश्चन my हाँ. question is, even Traffic Life, right, it was a magazine that would change themes every week, right? चाहे जो भी उसका You reception, know it would change themes every week, right? Fashion issue every month every was a month, theme. sorry, every month, हाँ, every month. And आइडिया अच्छा था, चाहे अब रिएक्शन से आई डोंट केयर, रिसेप्शन जो भी था, रैंडम मैगजीन. रिसेप्शन नहीं है यार. उस टाइम मतलब उसको यू कांट मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू मैगजीन विद अ ब्रांड नेम और व्हाटएवर. हम्म. ठीक है, बट रैंडम मैगजीन इवन, राइट, यू वर इंस्पायर्ड बाय मैड मैगजीन, बट स्टिल
ठीक है, अच्छा आइडिया है. एंड देन रैंडम टीवी आल्सो, राइट? वी वर डूइंग छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह, अलग अलग चीजें भी ट्राई कर रहे थे. गोल्डन केला, जिसमें आई थिंक पहले वाले के लिए आई थिंक एवरीबडी वेंट ओवरबोर्ड, क्योंकि आई थिंक टेबल्स को भी थीम दी थी ना. एक टेबल थी, नहीं, उसका that was थीम था. later. That was later. That was later. That was जिसपे स्टेज पे बच्चा पैदा हुआ था, ऑल इज वेल वाला. हाँ उस हाँ पे हाँ थीम हाँ. थी. उसमें एक टेबल का थीम था द मगरमच्छ फ्रॉम खून भरी खून मांग. भरी मांग, हाँ. तो my question is कि when you were doing all this, right? And this was the question जो मैंने आपको पहले ही बोला था ना. I wanted to, there are these questions जो have always been in my head and I wanted to ask. And हाँ. right, and so one is, now that I am looking at business, so what was there with money? Did it pinch you, uh or uh, you know there were family and friends who financed the business? Would they come at your back and say कि what are the returns, क्या हो रहा है यहाँ? And would you still be like, नहीं नहीं, मुझे ये पागलपना करना है, fund, and uh, I'll go with it? Or they would like, we'll cut you out? क्या कुछ क्या नहीं, था? I'm a lucky kid. मेरे parents were very supportive. I mean, obviously, when it was not easy, Hmm. especially with the magazines, उसमें you think about कि कितने पैसे देने हैं, क्या है. And then there was a time when we were doing TV production. Obviously, we made decent amount of money. Which was fine, and then that would fund anything crazy that we'd want to But do. TV production was way late, right? 2006 is No, when it you was started, Tom. seven, seven I started. 2008 के end तक TV production शुरू हो गया था. 2008 के end तक. So basically it was 1 year of trouble. No, trouble was there also, Swarg, because I wasn't running my thing very professionally or whatever. It was just about cash flow, and at the end of the year, how much money do you are left with. And I wasn't really paying myself any salary or whatever. Hmm. And but then I am a well off kid, so मुझे मतलब मेरे पास वो comfort था लाइफ में कि मेरे को अलग मुझे किसी ने पैसे दे दिए और कहा कि ट्राई कर लो, तो मैं क्यों नहीं करूँगा. So which is thanks to my parents. But क्या कहते हैं, सो मतलब मेरे लिए तो यही था ना कि अगर मुझे कोई ऑफर दे रहा है ये करने को, तो मैं गधा होऊंगा कि मैं कहूँगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ना आके जॉब करूँगा. तो आई मीन या पैसे कमाने थे, दैट वाज ऑलवेज वो. आई वाज वेरी मनी माइंडेड एंड आई वुड गो थ्रू मोशंस के व्हेन मनी इज इजी, देन इट्स लाइफ इज इजियर. देन मनी वुड गेट टाइट, यू विल गेट टाइटर. बट क्या कहते हैं, and then there were times when we stopped doing TV production because it was really crappy, shitty work. And there were, I can say it, most of the people we were dealing with were very shitty, unprofessionals. हम कोई professional नहीं थे, but at least we were mostly honest people. But the type of people we were dealing with, not everyone, but a lot of them were just like whatever. But उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको salary मिल रही थी from a channel and whatever. And but that also tells you what happened to that channel, right? So but yeah, it was really annoying to be a service provider. I mean, even now, if I have to do anything which is for a brand or something, I get very agitated because I don't like doing things for other people. So अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे पैसे नहीं बन रहे, वो मेरा हेडेक है. Hmm. पर एटलीस्ट मैं अपना काम कर रहा हूँ ना. Hmm. So Hmm. Comic Con के साथ that was an opportunity to break away from everything. And after a couple of years, it was not easy because you have to pump in a lot of money. Hmm. Hmm. तो उसके लिए, and then eventually reached a place where we had to change the way we were working also. So that was not easy. But yeah, party though, I was doing it for fun. I mean, because everyone was so much stupid and fun. And I remember that party was fun simply because the people who didn't put in an effort वो बाद में बहुत पछता रहे थे कि shit. But गोल्डन केला वाज फन. एंड क्या कहते हैं, बट उसमें कभी एक बार सीरियसली ट्राई भी किया था उसको पैसे कमाने में, बट यू कांट मेक मनी ऑन इट. बट हाँ, तो इससे इस चीज पे मुझे आना था कि कॉमिक कॉन इंडिया जब इट रियली हिट, इट बिकेम समथिंग. सो बिफोर
that, just as from a working conditions, right? Like if you enjoyed it more or less, or once you started, everything was about Comic Con. Did you enjoy that more, or both of them are separate things and you really don't compare them? And you also said that baad mein you became uh, more professional when you were doing Comic Con India, meaning like you don't involve yourself as much personally. So Yeah, I was 22 when I was doing मतलब पहली बार. So when you're 22 and you've never done anything in life, you will do whatever the hell you want. मैंने तुम लोगों को, I don't know if you were there, promotions दी थी दारू पी के, salary increments at a TGIF. ठीक है. अरे यार तेरा क्या चल रहा है, 5,000 ये ले, हर मंथ आई थिंक यू नीड 10,000 रुपीज मोर. फिर अगले दिन बहुत पछताया था मैं. हाँ, पर मैंने ये भी किया था कि अनंत हमेशा गायब हो जाता था फ्रॉम ट्रीटिंग ऑल ऑफ अस. सो वी, हम्म, आई रिमेंबर फॉर हिज बर्थडे वी फोर्स्ड हिम टू शो अप. वी हाँ, ड्रैंक एंड एट बिफोर ही शोड अप. वी हाँ, हिड cleared the table हाँ, and then he came and then we हाँ, ordered more and I हाँ, scooted off. मुझे पता था उसके पास पैसे नहीं है, मेरा काट जाएगा. And हाँ. Karan got stuck with it. And I पर think bill was some 17,000, कुछ जबरदस्ती बनवाया था सर. 34,000. 24,000. हाँ. ठीक है. हाँ. those ultimate Long Island iced teas. हम्म, पर इनफैक्ट वो जो रजौरी गार्डन वाला TGF था उसमें 2+3 होता था. You order 2 drinks and you get 5. हाँ, And then we used to also go to Hayes where we would reach right at 7:50 or 45 and उनसे 10 आप PP कर दो, 10 वोडका, 10 ये, क्योंकि वो हैप्पी आवर्स था. हम्म, But yeah, I mean, I was in my 20s, so I don't regret anything. But if I look back at many things, I will say, what the fuck was wrong with me? हम्म, But yeah, I mean, it was in the beginning, it wasn't some serious business. So it became a serious business when we started doing TV production. And हम्म, then when Comic Con came in, I mean, it just by default had to graduate. And हम्म, then it started pinching me now, because there's a difference between when you genuinely want to build something, तो उसमें फिर पैसे और time लगाना पड़ता है. So उसमें फिर ROI चाहिए, उसमें you need more people to be more responsible. And obviously I grew older, right? So when you grow हम्म, older, you evolve and you learn a lot more, so you change. हम्म. And then I even took on an international partner, तो उसमें things had to change dramatically. This was And Reed Pop. क्या? yeah. Reed Pop. Yeah. Now they're not. We parted ways with them, which is Okay. more than happy. But yeah, I mean, one of the good things was they made us completely professional Hmm. on how we do it, and I like it. And then obviously, as you grow older, you don't really want to get into the lives of people who are working, because काम hai, personal life hai. Obviously you care and you get involved to a certain extent, but not beyond that. Hmm. And I mean, there is no comparison. I mean, in your 20s, you have a lot more fun and it's different and it's exciting. And I mean, there's no regrets as such, but in the sense, would I want to function like that calm wise anymore? No, I would not. Hmm. If I could go back and tell myself, I would change a lot of things. But then, wo to is true with anything you look back at. Hmm. Because I can never be, I mean, I don't know anyone who does any creative work who can be just comfortable with whatever they've done ever and be like, you can look back at it and be like, हाँ इसमें कोई changes नहीं करने का भी लाइफ में. वो तो आप अभी भी देखोगे, आप कहोगे यार ये थोड़ा better हो सकता था, ये change हो सकता था. Hmm. तो वही है. But nothing, there's no regrets or anything ऐसा. But when it comes to, let's say, like management style, has your management style changed in any Yeah, way? I don't shout at people mostly. I don't throw things at you. मतलब मैं, I don't care if you don't show up on time, because eventually मैं निकाल दूंगा. हाँ. But I mean, that changes over a period of time. I mean, I was also working with a set of people and doing something which is very different. So Comic Con, different cheese hai. It's Hmm. not purely creative. Hmm. Hmm. So you can't function like that. Hmm. Hmm. Doing comics, magazines, even Hmm. a TV show, that life is completely 90% creative. Hmm. So Hmm. uske mein, the type of people who work, their lifestyle and everything, I mean, you work in a very different manner. If I was Hmm. still doing that, then life would be very different probably. Hmm. But ye kaam is not completely creative. Hmm. But the thing with doing something that you ideally are really into is that you
cannot switch yourself off when you have to, and it's very hard for you to say to yourself कि यार ये this is not working out. So Hmm. you plow yourself harder and harder into it, even though someone else would say, yeah, this doesn't work, let's cut my loss and go do something else. So that is always a challenge if you do something that you're into. You don't have to be passionate about it, but like if I'm into comic books and all of this, Hmm. but as you grow older, you hate young people more. You also don't, you have less patience for them. You also, I mean, I can't stand people who just मतलब I don't have patience Hmm. for people like probably did पहले. तो इसमें let's create a fictional scenario, right? तो I think when you started off, मैं mostly now you know कि Ichus Can't Scratch को मैंने पूरी तरह बस एक excuse use की गया है just to bring you here and ask you all the management questions. तेरा मेरा छोटा सा management tuition कर रहा हूँ मैं यहाँ and just Management. हाँ मतलब चोरी कर रहा हूँ Okay. ना all your experiences. Okay. हाँ so पहली बात ये जब आए चालू किया why did you even choose media or creative business as such? Why not anything I else? liked all of that. I Okay. liked all of it. I mean, if you consume some, I would note and keep track of things which have no use for Hmm. anyone else in life. Hmm. So I thought I really liked this, and I liked reading and writing, and I at that point in time I loved Abhi bhi, I still love it. You know, you read New Yorker, yeah, Esquire, Hmm. yeah, Rolling Stone, International, not Indian. हाँ. You get these amazing essays, New York Magazine, Atlantic, whatever. So you get, मतलब अमेजिंग चीज़ें हैं उसका. अब आजकल थोड़ा सा एक फॉर्मेट पॉडकास्ट में है विच इज़ अ लॉट ऑफ फन, काइंड ऑफ गिव्स दैट सेम फीलिंग. पर सो आई लाइक्ड ऑल ऑफ दैट, सो आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट. बस तो उससे शुरू हुआ था. आपको And क्या करने का and मन है? you also I think started उससे पहले you had no experience running a company या कुछ भी, no management, कुछ experience नहीं. Did you study management? नहीं, वो भी नहीं. No, I went to study business, but I हाँ. ended up doing economics because I couldn't get the best scores in accounting. Hmm. And then when I look back at it, I should have done English Hmm. because मेरे सबसे highest scores in life were in English. I Hmm. could write papers and all, and अगर मैं वो करता तो वो US, I did my college in US, तो वहाँ पे you get summa cum laude or magna cum laude. Basically, you graduate honors में. So I would have done that, but when you go from India बाहर, you have a lot of pressure. You can't say कि मैं English honors करके आया. लोग Hmm. कहेंगे इतनी दूर गए थे English करने. अब Hmm. नहीं होता. Hopefully नहीं होता होगा. Hmm. But yeah. So I did economics, which has nothing to do with anything I did. I mean, it had no bearing on anything I did in life. And you when you came back, you started off with I think तीन चार अलग अलग चीजें ना, publishing and basement records, recording studio भी. Yeah, I thought I could do a recording studio हाँ. because I still love music. I don't like most of the music now, but Hmm. I thought recording studio would be interesting, and then साथ में I wanted to publish. So Publish, recording studio, and these two are the main things ना. तो अभी और if कुछ you नहीं. हाँ अभी if you were to start that company again, what would you change? I would not change most things. I mean, up technology balgi, you can record in your house. You don't have to have a हाँ. recording studio. हाँ. But I mean, if I had to change, it would be a lot of the capital expenditure जो मैंने खर्चा था starting Hmm. में. But Hmm. yeah, to be fair, a lot of technology which seems very normal right now did not exist. So it. I mean, it was only a year into Skype, Hmm. and India was very actually promising उस वक्त. People Hmm. were like, आओ इंडिया में क्या क्या नहीं हो सकता, 2020 सुपर पावर. You know, तो no, but it's true. A lot of people जिनको मैं जानता हूँ मेरे साथ जो बाहर गए थे वो वापस आए थे, Hmm. and people did grow. We did do things, Hmm. but yeah, I mean, I would be more focused. I would probably, if I had to give myself advice, I would try and make a business plan properly and hash it out like I do now. But Hmm. then I Plants did are that pehle. I did that pehle also. It's not like I हाँ. didn't. It's just that the estimations of the returns were way higher than what they would actually be. Hmm. And also
the biggest lesson I learned over these many years is hiring. Finding good people was very difficult, and I went through a lot of crappy people, not in terms of they were good people, but they were not suited for the job that I was trying to do. And also, when you're selling concepts, it's very difficult. And so वो difficult चीज थी. I mean, I was going into a business जो कि dying business था, जो exist नहीं करता अब. अगर उस वक्त all those videos that we were doing, जो if I meet up with that guy who runs TVF and he jokes to me about how you had the zeroth mover advantage, because we were making those videos way before anyone else did on YouTube, right? Exactly. If he had stuck to it, maybe it could have gone to something. But then, but that's also a if, because a lot of people made a lot of videos, and now the type of people who make videos is very different. And I can tell you that most of the stuff is crap, and sometimes you don't even know why they're famous or funny or what is it. And I'm not talking from an age point of view. I'm just saying कि from a taste point of view, general and an average taste, not average taste. Like not your I get Kapil Sharma is funny. I'm not discounting it. He can actually be funny, but most times he's not. He's horrible at it. And once in a while, I'll find myself laughing at what he said because he's good at it, but not. But वही होता है ना कि if I go back, I would try to be more focused on where I spend my money, and then the key part was hiring the right type of people. I'm not saying I had bad people, but I went through too many bad people to get to good people. But then वो चीज ना कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपको करना पड़ता है. And I mean, I went through some great people jinke resumes were impressive or whatever, but then when working with them, I mean, I was shocked. Did you then eventually develop a process to get to good people faster? Every few years, I think I do, but then every few years, I also realized that it hasn't really gotten any better. I remember someone showed up and I missed that interview. There was a time where I lost those things. I was going through so many resumes. I tried collecting the funniest of them. कि मैं किताब छापूंगा with the best resumes ever in India, because some of them were like, there was a girl who wrote, I want to be a man. M.A.N. Manageable asset networker something. Then there was someone who went to Disneyland High School, and I was like, ये कैसे हो सकता है? Someone said, I want to be like James Bond and have honeys next to me as their objective, because they thought they were being funny and creative. And I mean, ऐसे इतने amazing थे, and I lost that entire file. But वो मैं and then I mean वो होता है अभी भी. I remember someone showed up for an interview with an entire portable shelf where her टॉपिक के अलग अलग राइटिंग के सैंपल थे, एंड वो बंदा इतना इंटेंस था, एंड आई वाजंट इन द ऑफिस बिकॉज़ आई वाज सो एक्साइटेड टू इंटरव्यू हिम जस्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू मीट द पर्सन. अनंत और ऋषिता गॉट टू इंटरव्यू हिम एंड दे कुडंट गेट ओवर कि कौन आया था हमसे मिलने, यू नो. सो एंड अभी भी होता है, पीपल आर वेरी वियर्ड. एक अभी बंदी, आई थिंक उससे वो तो ऑनेस्ट गलती थी कि उसने आई थिंक अपनी रेज्यूमे को गलत नाम कर दिया था. शी सेंट हर कोविड सर्टिफिकेट फॉर इन प्लेस ऑफ हर रेज्यूमे. And there's one person जिसके साथ I was talking, that person had like solid experience, and that person told me that I have to send him a sheet with numbers to prove that my company will not go under in 6 months to hire him. Then he will start talking. Yeah, I met someone for the first time I did interviews. I did not have an office, so I thought IHC mein I'll do it in the business office. So that it'll be professional and people will be comfortable coming to IHC, and IHC is a comfortable place to come. वहाँ पे लोग पूछे थे, आप अपना बिजनेस प्लान बताओ, आप बताओ. जॉब मैं दे रहा हूँ, पैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यू हैव अ राइट टू आस्क मी कि बिजनेस क्या है, पर मतलब जिस अकड़ में कर रहे थे तो आए क्यों थे. मतलब अगर आपको कहीं बड़ी कंपनी में जाना है तो उसमें लिखा हुआ है कि ये स्टार्टअप है, इसमें मतलब वी आर गोना फिगर इट आउट, ये हमारा प्लान है. तो अगर ये नई चैलेंज लेना और आपको लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आए क्यों थे. दिवसान, कितना मजेदार पॉडकास्ट है ना. सुमित, क्या पॉडकास्ट था. मैंने अभी तक सुना भी नहीं है, कल रिकॉर्डिंग है. कितना मजेदार पॉडकास्ट. मजा आ गया ना सुन के. अभी और बाकी है, ये तो इंटरवल है. हाँ, पॉपकॉर्न लेके आइए दोस्तों. तो लोगों को क्या करना चाहिए अगर इतना अच्छा पॉडकास्ट वो सुन रहे हैं तो? अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हो तो प्लीज जाके बकर मैक्स की वेबसाइट खोलें. उसमें नीचे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में एक छोटा सा आइकन होगा बाय मी अ कॉफी का. उसको क्लिक करके हमें थोड़ा सा ऐसा चंदा वंदा दे दीजिए.
अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ, और इसके अलावा हम हायरिंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा अभी तो फ़िलहाल हमारी टीम जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी सी टीम है, बट वी आर एक्सपांडिंग, वी आर हायरिंग मोर पीपल. तो वी हैव ओपनिंग्स फॉर सीनियर एनिमेटर, जूनियर डिज़ाइनर, एंड इलस्ट्रेटर एंड बिजनेस पीपल एज वेल. तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई, बकरमैक्स के करियर्स पेज पे जाके देखिए और अप्लाई कीजिए. वेरी गुड. तो क्या हम वापस चले इस मजेदार पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए? चलो चलते पॉडकास्ट की मजेदार दुनिया में. कट टू पॉडकास्ट. So coming to now, the I think last 10-20% of this thing was that I want to talk about Itch You Can't Scratch. When it came out, I was surprised because मुझे आज तक नहीं पता उस book में क्या है जो funny है. Because I did not design it to be funny. I did not think of a joke. मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि joke लिखना है कोई. मतलब जो समझ आया. Your life was a joke उस वक्त. But I was coming to के मतलब इन पर्पस एज सच बहुत जीनियस जोक सोच के नहीं लिखा था. एंड व्हेन यू आल्सो यू सेइंग दैट यू नो इट वाज अ गुड बुक एंड आई थिंक पीपल जनरली टोल्ड मी दे लाइक्ड रीडिंग इट. तो Yeah, because it was honest, ना. It was not. आई गेस ऑनेस्टी. हाँ, तो उससे स्लोली देन यू नो एंड वी वर डिस्कसिंग दिस द लास्ट टाइम आल्सो. आई सी दो कैटेगरी की ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक्स जनरली. One is which is very it wants to become the Marvel DC comic. And you're then talking about Indian comics. the comics we see desi comics. So दूसरी is which is a more you know I'll write it in all English और पूरी black and white होगी and it has to look deep and literature like. And my personal pain and why मुझे लगता है शायद मेरा कमेंट करना ही गलत है क्योंकि मैं तो खुद बनाता हूँ तो मेरा तो एक अलग पर्सपेक्टिव. बट मुझे लगता है व्हाट्स द पॉइंट अबाउट अ कॉमिक राइट? डिसेंट स्टोरी, वेल रिटन, आर्ट ठीक से बनाना है एंड यू हैव टू कैरी द स्टोरी बस. एंड यू सेड कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स. आई एग्री बट isn't that a good goal post? Yeah, but it's subjective, na. A lot of people like Meluha trilogy or whatever that stuff is. I don't like it. I don't think it's good But I didn't find it that bad. मतलब ठीक थी. मतलब मुझे वही है कि particularly नहीं बुरी लगी. नहीं, but मुझे मतलब जैसे चेतन भगत है अब. हाँ. A lot of people like it. हाँ. And I have said horrible things to people who read it. हाँ. So point ये है कि it's so subjective यार. वो तो I mean I don't know how people decide on what to publish. I'm talking about publishers, not talking about people who self-publish. उस case में तो you wrote a story and you're publishing it. So why would you be objective about it? You would just put out something that you like and you think is nice. It's your story or whatever. So in that case, whoever's buying it has to maybe probably give you some objective feedback or be like, I liked it or not. That's, you know, but in the case of someone like HarperCollins and then they publish those graphic novels, there is someone there is taking a call. Do they think that they can sell this to people in India, enough of it for it to be justified? Even if it is not a big selling kitab or whatever. And things like Meluha and Chetan Bhagat is easy sell, I guess so. But people like me would not think much of it. They're like, it's not my cup of tea. Meluha to is chalo is subjective because I personally think mythology पढ़ के like you know you मतलब थक जाते हो आपके आपने बचपन से इतनी पढ़ी है and that we keep rehashing and republishing stuff like that. Case of Chetan Bhagat to when what he was putting out technically for a lot of people was new, but it wasn't like I didn't think it was ever good. But people liked it because it's so easy to read, because a lot of people find it difficult to read heavy deep things because not everyone has the ability of has the sometimes you don't pick up a book because you want to have a deeper dive into something like सबके बस की नहीं है ना. Like some people love political books, some people love non-fiction. नहीं, और एक जर्नी भी तो होती है ना कि you don't start पहली बुक आप सलमान रश्दी नहीं पढ़ते ना, पहले आप कुछ हल्का पढ़ते हो. इंग्लिश गाने भी
इंग्लिश गाने भी मतलब हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं ना, मतलब मैंने पहला सुना समर ऑफ 69 ही सुनूंगा ना पहला वो. Yeah, like you pick up stuff basis the your peers, your friends, your circle, your family or whatever. ठीक है, वहाँ से शुरू होता है, which is not usually your taste. You start with someone else's taste and suggestions, and then you figure out what you like if you're curious enough. Otherwise, most people just stay कि यार मैं बचपन से ब्रायन एडम्स सुन रहा था, तो मैं उसी टाइप की चीजें फिर सुनता हूँ और मैं उसी में रहता हूँ. मैं मैं उन कभी लोगों की क्यूरियस. बात कर रहा हूँ जिन्होंने बचपन से ब्रायन एडम्स नहीं सुना, वैसे कह रहा हूँ. हाँ, मैं कह रहा हूँ उसको, अब वो बंदा नहीं सुना, उसको किसी ने कहा ये अच्छा गाना. एग्जैक्टली हाँ. अब अगर उसके पास क्यूरियोसिटी है, तो आफ्टर liking Brian Adams or not liking it, he will then go and find other things, or he or she will go find other things. But if someone is not curious enough, they'll see if they like it, they'll like it. If they don't, they'll like, this is not my cup of tea, and then they'll miss out on everything else. So it's very subjective. So coming back to writing a good book, it's मतलब I mean, when it comes to Indian comics, there is no editing as such. It's very difficult to get editing done, which so someone's giving you proper feedback on how to do this. But then when it comes to people who are self-publishing, I feel like उनको हाँ feedback दे दो how to make that particular book better, but you can't tell them कि ये बकवास है, इसको छापने का फायदा क्या है, because वो तो उसकी personal एक्सप्रेशन है कि मेरे को ये स्टोरी लिखनी थी, मैंने लिखी और मैंने छाप दी, अब मैं बेच रहा हूँ, अब किसी को लेनी है ले, नहीं लेनी ले. My case when I was publishing your book or someone, it was my taste. I liked that and I thought I could sell it. So do it. And Oud Bilal Manos is just funny and stupid, you know. So and it had a certain sense of humor sensibility to it, which was my sensibility at that point in time. So I published it. I wasn't expecting everyone to like it, but I thought there are enough people like me who would appreciate this, psychoticness, and they'll pick it up. In your case, your stories were just unintendedly funny, and because you're making yourself out to be the butt of the joke in most cases. So which is why a lot of people liked it. It was also readable. It was very easy accessible. It was not a massive read. Like for example, मुझसे कोई बोले टोल डू लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आई लाइक इट, आई रियली डू, बट मैं किताबें पढ़ने बैठता हूँ, मैं सो जाता हूँ बिकॉज वो इतना डेंस होता है. So you end up, I started that from the movies and I then went back to the books, and it was very difficult to read for me. Just say I'm not some big Shakespeare fan. A lot of people love it, you know. It's always fun to say कि हाँ मैंने तो ये क्लासिक पढ़ी है, ये पढ़ी है, but सच्चाई ये होती है कि most people ने पढ़ी नहीं होती है. So best चीज यही है कि in order to find like I'm just saying from a reader's perspective, you have to put up with a lot of crap to find stuff that you might like. So if you're curious enough, you'll find really good stuff, and then you know what you like. And you try and do that, and once in a while I mean, like for me, just say I would love, I love reading those Frederick Forsyth novels. I used to, and you remember Tom Clancy होगा, John Grisham होगा, ये सारे इतने easy go to Dan Brown type people, right? You pick it up and you read Masala. But then when you're curious enough and you'll come across books, you like sci-fi पढ़ना and you'll pick up Philip K. Dick and you'll like यार ये बंदा तो mental था, मतलब ये क्या, what type of acid was he on when he was writing some of these stories? And then you read Asimov, which is more accessible in that manner, and you like it. And then you read Arthur, and like I love Asimov more. And then I read Arthur C. Clarke, and I used to get so annoyed that I would skip over to the last के end में हुआ क्या, मुझे बस यही करना है मेरे पास. Whereas in Asimov, I would love the build up, and I would love, because I kind of knew that he's going to deliver on the goods. जैसे for Dune, like I loved that watching that movie. मैं परेशान हो गया, मैं वो book सुन no what I meant, the movie from the 70s or 80s whatever, it was so weird, it's so fun to watch it. Then the book is so intense that नहीं पढ़ा जाता. And then but अब वो movie आ रही है, I'm excited to watch it because as a somehow that book for me, मतलब as a movie, the book was good. I'm saying book बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत छोटी अच्छी होगी, but मेरे बस painful है. हाँ मेरे बस की नहीं थी मैं, and I can't and you go through phases as a reader, like sometimes it's just mood, you don't want to read a lot, and then sometimes you just go through so many books. So coming back to creating it,
I mean, it's subjective. I mean, if you're publishing yourself, then to, I mean, there is no feedback to give to No, you. but You should just, generally, one is, uh, uh, do you think repetition might help? Because one pattern that I've seen is most people publish once or twice. They publish, like not publishers, authors, एक करते हैं ग्राफिक नॉवल जो अभी तक देसी सीन में ट्रेंड सा है ना, या दो करते हैं एट मोस्ट, एंड दे हाँ, डोंट देन, हाँ उसके बाद मुश्किल होता है ना, because you don't make money on it. हाँ श्योर, बट दैट्स द, isn't that the point of madness कि मतलब to continue, because then you'll only get better if you make more. Yeah, that's not everyone's cup of tea, na? So you could do it because you've made it into your life, but not everyone wants to do that. So yes, if you are publishing comics, you yourself as a creator are publishing comics, you should keep at it. There will be phases where you might, it's frustrating because you don't make money on it. But then if you believe in it, then you, I mean, it's, I don't know. I mean, I don't know how to guide someone like that in the sense that if you don't, I mean, if a practical person in me would say, yeah, if you're not making money on it, okay, so I don't discourage you from making comics, but I'm just saying, do not be banking on it as your bread and butter. But if you have decided that somehow you're going to make it work where you will earn money and whatever, then you figure it out. You know, someone like Vivek is doing that. Vivek Goel from Holy Cow, he does that. It's his bread and butter. He publishes it, and now he's a publisher rather than, you know, just a creator or something. He sanctions other concepts and everything. तो उस केस में वो उसका जो taste है, and he's also probably learning what people like or not, you know, and people follow his books and he's kept at it. But वो आसान नहीं है ना, वो सबके बस की नहीं है ना, and it's not easy to survive on it. So तो वही है. इससे sort of going towards our web comics, right? And ये मेरे last 2-3 चीजें ही हैं. तो गोइंग टूवर्ड्स वेब कॉमिक्स, राइट, जो मैं दिन रात सुबह शाम कर रहा हूँ, मेरा मोस्टली बिलीफ हैज कम फ्रॉम बिकॉज आई हैव सीन हाउ टेरिबल डिस्ट्रीब्यूशन इज, राइट, एंड आई एब्सोल्युटली बिलीव कि प्रिंट इज डेड, मतलब पॉजिटिवली. But it depends if you're saying India or abroad. I personally feel overall, but everywhere. But वही है, मतलब it's what I think, and so I'm focusing on web comics, and I'm focusing on this transition from you know, how do you take a graphic novel to the web? How do you tell a longer story broken in parts, webtoon style, where you use the vertical scroll and you know, keep people engaged? How do you do it with like UI UX? Say you, how do you mimic graphic novel ke aesthetics? Like a person who really likes graphic novel, if they get the same vibe from a web comic, then that you've done that. तो वो अभी तो नहीं किया है, अभी तो मतलब खुद की वेबसाइट काफी थर्ड क्लास है. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट अभी जो वेब कॉमिक्स में एक ही चीज है जो कंसिस्टेंटली बनती है, आर कॉमिक्स ऑन इंस्टाग्राम, दे आर वेरी रेगुलर. सो डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दोस, या मतलब यू थिंक वो जो है सो है? I mean, look, people like Oatmeal, Nathan Pyle, those things are big. So usme, I mean, Instagram is just one way of delivering it, and that's the trending one. I'm sure it'll evolve into some other app or whatever that we end up spending more time on. But I mean, web comics is exciting. I'm not, I'll be very honest, I haven't really connected a lot with webtoons mein kya ho raha hai. I mean, I know it exists and it's a certain type of content, but I've not really gone into it because I found that a lot of the newer type of anime or manga is something which somehow I'm not able to connect with. Like, I mean, the older stuff I still find interesting. Like, मेरा मजाक उड़ रहा था बहुत ज़्यादा कि ओ माय गॉड, I finally watched Mobile Suit Gundam, which is this old Japanese anime from the late 70s, early 80s. अब उसके इतने हजारों आइट्रेशन सब कुछ हो चुके हैं, दुनिया बन चुके हैं, एक एग्जैक्ट लाइफ साइज रेप्लिका ऑफ लाइक 100 पता नहीं पर 50 फीट का इन जापान लगा हुआ है. बट मैंने लास्ट ईयर इस साल उसको फॉलो करना शुरू किया एंड मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी. बट देन
it's also access, right? Malab, it's because suddenly they put the entire original trilogy, which was series like shows there, and then they made it into 3 movies and they put it on Netflix. And it was so much fun to watch with subtitles. It was intense. And uske baad I started following uska and pirate streaming sites ke through to watch the entire sequence. Eventually I'll finish it. And I realized that I had already bought the graphic novel uska pehle, because obviously I knew about the series, but somehow this graphic novel does not do justice to the anime. So coming to web comics, I mean, it's a medium. It's certainly interesting. It's it's mostly about quick takes. Webtoons apparently, and a lot of people do run long running series. But then, I mean, there is a business for it. It's just that, like, my only feedback to people who create comics right now is, yeah, stop thinking of yourself as some Indian creator. Think of yourself as a creator and try and create something if possible, or give your stories enough universal context that even if with Indian references, it's easy for a lot of people around the world to understand what you're doing. Because if someone sitting in Korea, Japan, or whatever can sell and get their comics and stories and characters popular across the world in a place where they don't speak that language, you could also do that. Sure. There is nothing holding you back, and it's web में you can access anyone. As long as you're solving accessibility, कि मतलब वो पढ़ सके उसको और थोड़ा समझ सके जितना भी. I mean, like, okay, obviously if you make it heavy on Indian context, then it becomes like One Punch Man. Okay, it was an online web comic, then they made it into it. Well, it's a purely Japanese concept. मतलब it's a Japan, मतलब उसमें whatever, but तो उसका जो gist है वो funny है ना, वो end में उसको पढ़ते वो end में बस एक punch मारता है, and वो intense है. एक assassination classroom, एक alien आ गया है जिसने out of 7th या 8th class के classroom को kidnap कर लिया है, and they have to kill him, otherwise they blow up the world. But it is so intense. It doesn't matter if it's in Japanese. It's such an intense concept. So, but that's not easy. That's a certain mindset and things that you've grown up on, जिससे आप influence होके कुछ इतना crazy idea सोचते हो. आप जो यहाँ पे crazy idea सोचोगे, वो इंडिया में आपने जो consume किया है, जो आपके अराउंड है, उससे जाके आप इंस्पायर होके कुछ ऐसा बनाओगे. सो चांसेस है कि आप ऐसा कुछ बना सकते हो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो. एंड जैसे राम वी है, अब उसने बड़ी सारी कॉमिक्स बनाई हैं जो कि a lot of people abroad have appreciated and liked. And he draws upon Indian stories and characters or whatever. Now I've not read all of them, and I mean, I don't want to go into reviewing it, but I know कि उसकी एक sellability थी, but वो ढंग से लिखी भी गई थी. But that was a graphic novel of वो. From a web comic perspective, you can go wild as you want. Exactly. So I mean, I keep using his example just to tell you that your Indianness gives you a lot of uniqueness, ideas wise and everything. But at the end of the day, if he's a good writer, he's a good writer, so he can write a lot, right? So which is why he's been able to crack through, and now he's writing Catwoman, Batman, Swamp Thing and everything. For an Indian writer, comic book writer, वो तो बहुत बड़ी चीज है life में. And then if you remember Sumit, the other Sumit Kumar, right? हाँ. I'm in constant touch with him. हाँ, I know. वो Batman draw कर रहा है अभी. हाँ. वो बच्चा था जब उसको ढूंढा था, right? मैं उसके सारे वो यूज करता हूँ. मतलब उसके people come on my Twitter, I keep saying yes, हाँ मैं वही सुमित कुमार हूँ. मैंने एक बार उसका एक फैन है, उसको इंटर्न की तरह हायर भी कर लिया था. But I remember, right? He was a kid, right? Abhi bhi he's a kid, but he was a kid right out of Delhi College of Art. I remember. Yeah. We gave him a scaled up contract. Just to check if he can make that kind of art, and he was like making every single thing. And the most amazing thing was he was not just doing it script में जो दिया है कर दिया. He would make exactly. And another thing is he's humble and he's smart. He's really intelligent. मतलब वो 10 साल पहले उस लेवल का काम कर रहा था. So it took that while, but he collaborated with Ram and all, and now his work is appreciated across the world. So, and that is in the normal way of trade, not even web comics. So I mean, you can easily, my only thing, any person I come across is like, just stop thinking I have to sell to some person in India.
I mean, just don't tie yourself down कि मुझे इंडिया का कुछ करना है, इंडिया का कुछ करना है. ओके, सो अब एक चीज है कि ह्यूमर की हमारी बहुत बार बात भी हुई है बीच में, वेर यू कीप टेलिंग मी ऑन इंस्टाग्राम के जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, मर जाएगा, कुछ हो ना जाए. तो मतलब, बट ओनली पॉइंट दैट आई कीप मेकिंग टू यू इज के वन इज it doesn't work if it's not honest, right? Yeah, but you also have to live in reality of it. So not everyone has to be the bravest of the brave. So um I'm not saying you should censor yourself. You should, but it's just the climate where I mean, it doesn't even matter कि तुम्हारी politics क्या है. You can just be picked up for putting out a social media post, and then the shit that you go through, by the end of it, it is not worth it. You were giving me the example ना अपना खुद का जो Yeah, which I can't लगे थे. unfortunately हाँ, I do know. it publicly हाँ. because But it was a legal matter. But but that was nothing to do with politics or being honest or not. But I'm saying that at this point in time, the law is such at times where you put out anything and someone can get offended, and then the consequences of it is so मतलब drastic at times, and there is no recourse immediate. ऐसा नहीं है कि अच्छा सर someone didn't like it, they filed a case against you, then you can. But मतलब it's, I don't know. I mean, for someone who's married, has a family, I'm like, there are मतलब it depends. You need to first, I mean, before if you need to take a call on that. I mean, I agree standing on principle, but then I'm older now, so I'm much wiser, and I've also gone through things. So I'm more about you make a calculated risk, in my opinion, and things are not the same. I remember हमने random का एक cover छापा था जो, if I were to do that right now, I have a feeling I would get into trouble. I'm not saying I would Commonwealth get. Games का just before Yeah. Commonwealth Games were going to begin, that Yeah. जो mascot है The शेरू entire, वो मरा हुआ the पड़ा है, entire और political शीला reason is दीक्षित that Shah और क्या yeah. नाम था उसका, नाम भी भूल गया मैं, जो ऑर्गेनाइजर था, जो बेचारा जेल भी चला गया, कलमाड़ी वगैरह बंदूक लेके पोज कर रहे हैं उसके साथ शिकार पे खड़े जैसे पुराने अंग्रेज शिकार हाँ करते थे. Now I remember even the first cover of Random where we made a Naga Sadhu, right? And उसमें joke is not about him, but we put the sticker and उसपे भी tension हो गई थी. But then that was a very different time. अब बहुत different है. So point is के I mean, look, I'm no one to say to someone that you should not put out honest stuff. It's up to you. But if I know someone and I personally know them, and if I think that what they've put out could get them into trouble, तो मेरा तो हक बनता है मैं जाके बता तो दूं भाई ये consequences हो जाते हैं. So but be prepared for it. so generally saying, मतलब when we read uh, when we read anything, right, कोई book या कुछ भी, we don't really know उसके creation के time पे क्या environment था, right, उसके creator के around या कुछ, we just judge it on its own merit, right? Yeah. Also, earlier I used to think कि नहीं इंडिया में होता है, इंडिया में होता है, इंडिया में होता है. But as and when I've read more and more brave things, what I've seen is individual creators at time have taken that pain to fight for it. Okay, I'll make it, then I'll fight for its existence, and that expanded uska space for other people to take the fight further. So I'm just saying, it's not sure हर बार लड़ने की जरूरत नहीं है, pick your battles कब लड़ना है. But I'm just saying, if that isn't that a slippery slope कि मैं डरता ही जाऊंगा तो मैं कहाँ जाके रुकूंगा, मतलब वो छोटा नहीं होता जा रहा playing field. Yeah, but the thing is that I mean, I grew up in a time where I never felt like that, but now I feel like it. I mean, मेरा point is simple. As someone who's experienced stuff where it's not easy tackling legal matters, I'll just say that you have to take that call if that's the hill you want to die on. Basically a case by case. I mean, it's your personal choice. So I'm not saying you should censor yourself. I'm just saying that the climate that you're in, it's it is scary for people at times, and, because anyone can get offended and then file a complaint or whatever, and then
I mean, it depends, yeah. It depends on who you are. So I'm older now. I have different priorities in life. So is that something I would want to spend? Not older, not like I'm some 50-year-old person, but I'm at a point in my life where I don't feel like where I would go out and spend my time and money and everything fighting for a cause. As of now, maybe it changes. Everyone has a cutoff where they're like, fuck it, अब तो बहुत हो गया है, and बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हो चुका है लाइफ में, but point ये है कि but at the same time, it's just natural. If you know someone, you're like, yeah, maybe this could get him into trouble. Maybe I should let him know, because sure. Also, because when we were publishing at that point in time, it seems like not too far back, but social media wasn't even like this. It was so different. In fact, I know when you even advise me, obviously you advise from a point of के देख ले, मतलब if you want to take care of this one, मतलब it might do something bad. तो that I know, मतलब I'm just वही, I also go, ऐसा नहीं है कि I'm absolutely हर जगह झंडा उठा के मैं भी जा रहा हूँ. मैं भी देख रहा हूँ कि actually it happens on every comic. So हर comic को भी I also evaluate case by case, and it's already there. It's in the DNA. But yeah, you're doing something where you deal with a lot of politics. So that is something that you have to keep in mind, and you have to be practical about it. And you don't have to be maybe that person. You have a firm now, so one person ki job hai to be practical, the other person is supposed to be creative and just go crazy with it. The only thing is, kya kehte hain, it's just that this is not the same time as before. I mean, even in terms of social media, even in terms of वो जब last cover छापा था, that was 2010, and even at that point in time, like even Facebook wasn't like, Facebook was cool. So can you imagine Facebook being cool? So, and Facebook wasn't like all types of trolls and like fake stuff, all of that, right? It was still a community. You genuinely thought you were connecting with people. People actually put up status messages, like वो अभी भी remind करता है ना कि आपने 10 साल पहले क्या बकवास लिखी थी. तो Instagram didn't exist. So I'm just trying to say that क्या कहते हैं, I mean, I'm just speaking from my experience. I don't really feel like फालतू में spending my time and money on something like this. But then you also told me about Canada. एक suggestion के Canada सही है, वहाँ जाके कर सकते हो. I mean, and I did explore it. मैंने उस बंदे को कॉल भी किया था. पिछले 3 महीनों में the number of people who've called me about moving to Canada or shifting abroad is not a joke. I mean, I'm just worried so many well-meaning people will also leave. तो फिर यहाँ क्या होगा? तो but anyways, but point ये है कि it is your personal decision. There are a lot of brave people who put out a lot of content, and they take that chance and they want to be honest with it, and I salute them for it, and it's great. But it's not everyone's cup of tea. I think मैं डरा हुआ था, but until when I saw these two people, एक तो sanitary panels और वो who's that guy जो comedian है, politician वाली, जिसका सस्ता वो डुप्लीकेट लगता हूँ ना मैं, कुणाल कामरा. हाँ, तो I'll tell you basically what happened was कि they stood up for it, and that उसकी वजह से I am brave. I'm just saying that कि they went through it. They're like, ठीक है, तू कूड़ा कर रहा है कर, but I'm not backing down. And maybe whatever they faced, but just seeing them gives me some. No, that's great. I mean, I'm not talking about camera, but pencil. Sanitary panels. Sanitary panels is that person was brave because that was bullshit. I mean, they didn't put out anything which was offensive, and that only emboldened them to go ahead and be more open about how they want to express themselves. But the thing is, it depends on what your aim is, like that. आप क्या कर रहे हो, क्या चला रहे हो, क्या है, तो वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड वो आपका कॉल है, वो इट्स अ पर्सनल कॉल, एंड
I can tell you a lot of people would support it, and they do, but would everyone themselves get into it? Not everyone. For sure. And for sure. So yeah, it's not, and when you run a business, it's a very different thing. I agree. Yeah, if I was only being a creator, then it's a very different. I would be very different. I would be more idealistic maybe in life. So I don't know. So it's your personal call, but now you run a business also. So all I'm saying is when you No, that has absolutely, like, last 2 years, this whole I've now been able to successfully compartmentalize the two, and obviously the business takes priority. That goes without saying. I'm not saying it should take priority. I'm saying that now that you also run a business, so when you take a decision, you have to consider everything. What I'm trying to say is कि जो क्रिएटिव बिजनेस है, एक तो वो अपने आप में काफी, मुझे लगता है, अनॉमली है, क्रिएटिव एंड बिजनेस. तो और I think it's heavily underrated, and I don't think there are a lot of people who study or do creative business. I think there are not a lot of people who understand creative business, how to run. I think वो है अपने आप में अलग सी चीज है. Creative business by itself sounds like an oxymoron, and when it talk about creative business sounds like you're funding wala scam. So no, but if somebody is good at it, right? Somebody who can manage business and creative people and make something happen. Those people are far and few, but कोई है तो I think it's a great thing to learn. मुझे लगा अभी. Yeah, I mean, creative business eventually, yeah, as you evolve and you grow older, your priorities are very different. So it depends on your life ki priorities us waqt. So at that point in time, creativity could go down, business could go up, and then sometimes you're like business could go down and creativity could go up. So it depends. And the younger you are, and more, again, it's just depends on your. I think I'm pretty sorted. So our company policy is पैसा पैसा पैसा, and it's a company का वो लिखा होता है ना, कहीं जाते हो तो रिसेप्शन पे कंपनी पॉलिसी, एंड इट्स ऑलवेज अ शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा होता है, आइडियल, आई फॉर इनोवेशन, डी फॉर डेप्थ. तो वैसे आई थिंक पीपीपी है बकर मैक्स का कंपनी पॉलिसी. So coming back to finally closing with the age, so there were 3-4 fun facts जो मुझे अभी तक पता है, which I wanted to tell you. One was there was a random Japanese purchase. So there was some person in Japan who bought Itch You Can't Scratch. Wow. And so I don't know how that happened, but that happened. Already anime there. But then there was one person who bought Itch You Can't Scratch on Amazon and then returned it, and uska feedback was he was looking for itch guard cream. ये मुझे पता भाई. And generally it has become, and personally for me, I think it sparked my career, and I think since then, whenever I found my sanity, I've always thanked you again and again for it. I think it was the one who started my career, more or less, where I gave me the clarity that now I'm married to comics. Like uske pehle it was more or less an affair, but uske baad I has clarity कि अब यही है. As we used to make fun of you कि परसों तो इसने कॉमिक्स पढ़ी है लाइफ में पहली बार, बड़ा चला ग्राफिक नॉवेलिस्ट बनने. और हाँ, सही में, मतलब अभी मुझे इतनी हंसी आती है कि all the comics I've read were from your library, and now I have people who say their graphic novel reading is a subset of what I have read. So that's the joke. New read. Why? That's the joke. कि there are people saying their graphic novel reading is a subset. तो imagine उन्होंने दो पढ़ी है. I stopped recommending people comics. क्यों? I'm being completely asshole nerd वाला चीज where I've evolved as a reader. So अब मैं जिस level पे पढ़ता हूँ आप तो compare ही नहीं कर सकते. तो okay. Because most people come कि यार वो Marvel DC and problem ये है कि unfortunately उसके beyond लोगों को समझ नहीं आता दुनिया actually exist करती है. So I agree. I think उसमें the greatest find I got was Groot. Groot नहीं, sorry. Gru.
So you should, अच्छा उसमें I should make you feel bad. You know, you have never met him, but Akul has. क्या बात कर रहे हो? ठीक है, कोई नहीं, as long as I read it, I think ठीक है, I'm happy. उसमें भी सेम चीज हुई थी. The whole comic is on his website, free to read. And when I read it on his website, I learned more about his process than by reading it on physical, because it's being made digital. Everything is being made digital, more or less, most of them. I remember I was able to sneak myself into a DC का office and then कुछ हुआ नहीं था, but उनके पास एक wall थी of free comics. They said आप ले लो. तो मैं तो उठा के ले रहा था. उसमें मुझे एक सर्जियो अरेगोनिस की compilation थी from Japan, like in the sense they published it for the Japanese market. तो वो इंटेंस थी, मुझे याद है. आई थिंक अमिताभ ने मेरी लाइब्रेरी से मार ली थी. पर उसमें वर्ड्स तो होते नहीं है ज़्यादा, बट जो थे सारे जापानीज में थे. एंड दैट वाज एन इंटेंस थिंग. वो अमिताभ के पास है. एंड देन आई रिमेंबर उसके पास वो भी एक नंबर्ड ग्रू का स्पेशल वो बना था, लाइक मैसिव थिंग आई फाउंड एट सैन डिएगो कॉमिक कॉन. तो वो उसने अपने लिए मंगाया था. बट या ग्रू इंटेंस है. सर्जियो अरेगोनिस तो भगवान है सब. आई थिंक उसका पैरेलल एक अभी मुझे वहाँ बुक फेयर से वो मिली थी, फूलन देवी की लाइफ की स्टोरी इन अ फ्रेंच ग्राफिक नॉवल. Yeah, I have it. It's pretty it's nicely done actually, surprisingly. And काफी violent है, काफी intense है. But उसका cover काफी intense था. I actually bought it because cover intense लग रहा था. I thought इतना effort मारा है cover में तो किताब बुरी नहीं होगी. And किताब बुरी नहीं थी. So yeah, काफी अच्छी हो. सही. तो हाँ, this is it. And बस I just wanted to use it. You can't scratch के बारे में थोड़ी बात and use that as an excuse to talk about ये सारी चीजें भी. चलो जी. आई होप कहते हैं आप कुछ ऐसा पब्लिश करो फिर आपका नाम बहुत रोशन हो. नहीं, मुझे अब मैं वो उस मोड में जा चुका हूँ जहाँ मुझे बनाने में इतना मजा आने लगा है कि मैं उसी में ट्रिप करता रहता हूँ. बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा. एक्चुअली इतना अलाउड नहीं होना चाहिए जितना आने लगा है. अच्छी बात है. हाँ चलो सही. ठीक है जी. बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. थैंक यू. ओके बाय. बाय. अरे दिवसान, कैसे लगा ये पॉडकास्ट तुम्हें? क्या पॉडकास्ट था सुमित, अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं हुआ और मैं अभी से एक्साइटेड हूँ. हाँ, तुमने तो सुना भी नहीं है और तुम इसके इंट्रो, मिड और आउटरो भी रिकॉर्ड कर रहे हो. पर कैसा लगा? क्या तुम्हें मजा आया? अमेजिंग पॉडकास्ट सुमित, क्या बताऊं. हमारी बातें इतनी इंटरेस्टिंग. और हमारी नहीं, तुम नहीं थे उसमें. मैं और जतिन की बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी. हाँ, we all are Buckermax. No, I just want to rub it in every time कि you were not in that podcast. ठीक है, आता हूँ मैं रिकॉर्डिंग में. ठीक है. बट ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया, we're doing a very interesting thing. We have actually these copies of Itch You Can't Scratch, जो actually कहीं scratched हैं, कहीं marks हैं, थोड़ी बहुत binding में कुछ problem है. But we are giving these away on Buy Me a Coffee at slightly discounted rates, plus I will sort of doodle you on this page. And and if you actually buy me a coffee का हमारा membership अगर आप ले लेते हो तो then it will be cheaper. And buy me a coffee के extra section में, so buymeacoffee.com/Buckermax. otherwise you can go to buckermax.com का राइट कॉर्नर पे छोटा सा कॉफी का आइकन. एंड हाँ, उसके अलावा कुछ और बेचना है, वो बेचना है. कॉफी दोबारा बोल दो. हाँ, तो बाय मी अ कॉफी, प्लीज हमें कॉफी दीजिए और हम आपके लिए कॉमिक्स बनाएंगे. 2 कौड़ी की लीचड़ ऑडियंस वाली. नहीं, आवर ऑडियंस रॉक्स प्लीज. नहीं, बकवास. ये पार्ट कट कर देना. नहीं, सही में थक चुका हूँ मैं. इनको एक ही कॉमिक पढ़ाने के लिए 50 चीजें करो. घटिया 2 कौड़ी की ऑडियंस. अच्छा, करियर्स के बारे में भी रिपीट कर देते हैं एक बार दोबारा. तो सिंस वी आर अ स्मॉल टीम, वी आर एक्सपांडिंग एंड वी आर हायरिंग मोर पीपल. एक्सपांडिंग. प्लीज जॉइन अस. बकरमैक्स की करियर्स पेज पे देखिए. हाँ, either give us money or take money from us. हाँ, बेसिकली वन ऑफ जीरो सम गेम. ठीक है. और हाँ, उसके अलावा
भाई ये फ्री में ऑडियंस ना बनिए और इन बेचारी होमलेस बुक्स को अपना आशियाना दीजिए। एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट एडिशन, तो इसमें ना लोगों ने लिखा है, इसमें जतिन ने लिखा है। सो दिस इज व्हाट जतिन सेड। हाँ, ये पैसे वेस्ट करवा दिए, लव जतिन। एंड ये आनंद जिसने एडिट की थी उसने लिखा, डियर सुमित प्लीज डोंट डू दिस एवर अगेन। And you did do that again. I did do that again. But how actually I mean this one also in the first one where I have Jatin burning notes. But actually इसका बाद में ना put in, and everybody if you need some, you know, I'm not really into praising myself, but you know तारीफ praise page है पूरा, खुद का praise का page है, तो praise page में देखो, please go on, can you please read the praise? This is the worst comic / graphic novel I've ever read. Come on यार, sincerely everybody. please यार honestly क्या लिखा है, आप पढ़ के सुनाइए। It is a must read for those who are tired of their mundane and monotonous lives, said Abhishek Sharma, director तेरे बिन लादेन। ओहो, celebrity, क्या बात है। अच्छा, दूसरा है कुमार्स ऑटोबायोग्राफिकल ग्राफिक नॉवल विल टिकल एवरी फनी बोन इन योर बॉडी, हिंदुस्तान टाइम्स ब्रांच। सारे पढ़ने हैं? हाँ, और क्या, मेरा ईगो कैसे, मैं सोऊंगा कैसे आज तो boosting Sumit's ego more. The book's honest and goofy narration of the author's short but eventful life is sure to grab eyeballs. Times of India. वाह, अच्छा, एक सेकेंड। It heralds the, ये वाला तो heralds word यूज हो गया, मतलब कुछ अच्छा आने वाला है। It heralds the arrival of an original comic talent. Sumit Kumar derives nothing from those who have gone before. He is also not your बाप का नौकर। Jerry Pinto, author, M and the Big Who. I thought Shashi Tharoor ने लिखा। This beautiful piece, please buy. Okay, and let's end it. कुछ है या कुछ भी बात करनी है? Please follow Buckermax Comics, पढ़िए, enjoy कीजिए। हाँ, you can get Buckermax बातचीत from you know wherever you get your podcast from, Apple Podcast, this, that, कहीं से भी, and that's it. Okay, bye.